oral mucous membrane. Please do like and subscribe. Definition: mucous membrane is moist lining of the intestinal tract, nasal passages and other body cavity that communicate with the exterior. जो बाहर के साथ communicate करे उनकी lining को बनाता है mucous membrane. ठीक है, जैसे intestinal tract, nasal passage या body cavity. In oral cavity, the lining is called as oral mucous membrane. It shows properties of both skin and intestinal mucosa. Function: oral mucous membrane protects, gives sensation, secretes and also helps in thermal regulation. So it is PAST, past. For example, protection, sensation, secretion and thermal regulation. So types of according to the types according to variation in different regions, they are masticatory mucosa, lining mucosa and specialized. Okay, so masticatory, lining and specialized. According to pattern, they are keratinized and non-keratinized, and according to the location, they are masticatory, lining and specialized. Clinical feature: they are colored, moist surface and absence of appendages. They are smooth surface with few folds and wrinkles, varies in firmness and texture. See components of oral mucous membrane. This is epithelium, then lamina propria, submucosa, periosteum and bone. So you have to draw this diagram neatly. Bone, periosteum, submucosa, lamina propria and epithelium. This is a histo slide followed by all the histo slides. So see, you have to study this on your own. Structure of mucosa and variation in different oral site. Take a screenshot and read it on your own. Epithelium. Classification of epithelium: we have simple epithelium, stratified epithelium, pseudostratified epithelium and transitional epithelium. Okay, so let's begin with stratified epithelium. This is made up of more than single layer of cell, strata, that is layer. These withstand more trauma than simple types and thus are seen in places which are subjected to friction and shearing forces. See, they are in layers. So what they are going to do? They are going to help you withstand trauma and friction. Since they are thick, absorption cannot occur readily. Furthermore, they are ill adapted for secretory functions. For secretion, we need single layer. When necessary, secretion must therefore be provided by associated accessory glands that open into the free surface of the membrane by the ways of duct. They are classified according to the cell type on the superficial layer: stratified squamous non-keratinized and stratified squamous keratinized. Oral epithelium. The epithelium of the oral mucous membrane is of the stratified squamous variety. Stratified squamous variety. It may be keratinized. Keratinized कौन सा होगा? जिंजाइवा और हार्ड पैलेट. जबकि जो जिंजाइवा है वो केराटिनाइज में भी पैरा टाइप का है, और नॉन केराटिनाइज जैसे चीक, सबलिंगुअल टिश्यू डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन. A common feature of all the epithelial cell is that they contain keratin intermediate filaments as the component of the cytoskeleton. इनके अंदर मतलब ये केराटिनाइज है तो इसके अंदर तो अपना साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स होंगे ही. This one of the distinguishing feature of an epithelium cell regardless of its function. तो साइटोस्केलेटन जो होता है, जो केराटिन का होता है, वो इम्पॉर्टेंट होता है और डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है एपिथेलियल सेल का. केराटिनाइज ओरल एपिथेलियम हैज़ 4 लेयर. एक होता है बेसल, स्पाइनोसम, ग्रैन्युलर और कॉर्निफाइड. जो कॉर्निफाइड होता है वो सबसे ऊपर का लेयर होता है, फॉलोड बाय ग्रैन्युलोसम, देन स्पाइनोसम, देन बेसेल. बेसेल तो सबसे ज़्यादा जगह कन्फ्यूजन आएगा तुमको, स्पाइनोसम और ग्रैन्युलोसम है तो याद करना, एस पहले आता है यहाँ पे, फिर जी आता है. जैसे हम लोग में होता है क्या, देखो बेसेल याद रखना और नीचे से उल्टा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एस, जी और सी, तो याद रहेगा. बेसेल, स्पाइनोसम, ग्रैन्युलोसम और कॉर्नियम. Stratum basale. The basal layer is made up of cells that synthesize DNA and undergo mitosis, thus providing new cells. जो बेसेल होते हैं उनमें DNA synthesis होता है, mitosis करके new cells बनाते हैं. They can be cuboidal or columnar cells adjacent to the basement membrane. Most new cells are generated in the basal layer. Therefore, the basal cell and the parabasal spinosome cells are referred to as stratum germinatum. They germinate actually to give what? They give new cells, DNA synthesis. तो बेसल सेल आर मेड अप ऑफ 2 पॉपुलेशन. एक होता है स्टेम सेल्स, एक होता है एम्पलीफाइंग सेल्स. जो स्टेम सेल्स होते हैं वो बेसल सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, उनकी प्रोलिफरेटिव
पोटेंशियल को भी बड़ा रिटेन रखते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाइड सेल आर अवेलेबल फॉर सब्सिक्वेंट मैच्योरेशन। देखो पहले स्टेम सेल्स क्या करेंगे, अब बेसल सेल बनाएंगे, उनमें प्रोलिफरेशन करेंगे और वो प्रोलिफरेशन करके एम्पलीफाई हो जाएंगे और मैच्योर हो जाएंगे। ओके, देन इज स्ट्रैटम स्पाइनोसम। स्ट्रैटम स्पाइनोसम आर स्पाइनस सेल्स, स्पाइनोसम स्पाइनस, दे आर इरेगुलर पॉलीहेड्रल एंड लार्जर देन बेसल सेल। ओके, तो जैसे कि वो तो बस प्रोड्यूस करा था तो एनलार्ज होंगे, मैच्योर होंगे, इससे बढ़ते जाएंगे। द सेल्स आर जॉइंड बाय इंट्रासेल्युलर ब्रिजेस दैट आर कॉल्ड एज टोनोफिब्रिल सीम टू कोर्स फ्रॉम सेल टू सेल अक्रॉस दी, दे आर इंटरसेल्युलर ब्रिजेस जो है वो डेस्मोसोम होते हैं इसमें। ओके, और जो टोनोफिब्रिल्स होते हैं वो कोर्स करते हैं फ्रॉम सेल टू सेल अक्रॉस दीज रिजेस। ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर हिस्टोलॉजिक एग्जामिनेशन सेल्स श्रिंक अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, जो डेस्मोसोम होंगे वो प्रोमिनेंट हो जाएंगे और प्रिकली अपीयरेंस देंगे। देखो क्या होगा कि जब हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं, स्लाइड्स वगैरह भी दिखाते हैं, तो सेल्स क्या होता है, श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है, और उनके जो डेस्मोसोम है, जो इंटरसेल्युलर ब्रिजेस हैं, वो प्रोमिनेंट हो जाएंगे, तो वो लोग का प्रिकली अपीयरेंस आता है। ग्रीक वर्क अकांथे इज यूज्ड इन पैथोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन। एक्यांथोसिस, एक्यांथोलाइसिस, थॉसिस और लाइसिस। ओके, द बेसेल एंड द प्रिक्यूल सेल लेयर कॉन्स्टिट्यूट हाफ टू 2/3 द थिकनेस ऑफ द एपिथेलियम। देखो जैसे ही एक तो तुमको बर्थ दे रहा है तो वो हो जाता है तुम्हारा कौन सा, बेसेल सेल यानी कि न्यू सेल्स का। दूसरा है तुम्हारा स्पाइनोसम यानी कि वो एम्पलीफाइंग सेल स्टेम सेल्स को दे रहा है, तो ये कॉन्स्टिट्यूट क्या करेंगे, 2/3 ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ द एपिथेलियम। ऑफ द 4 लेयर स्पाइनोसम सेल्स आर द मोस्ट एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डीएनए बन रहा है। ओके, स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम। स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम कंटेन्स फ्लैटर एंड वाइडर सेल। वहाँ पे पॉलीहेड्रल था, यहाँ पे फ्लैटर और वाइडर सेल है। दीज सेल्स आर लार्जर देन स्पाइनोसम सेल। दीज लेयर इज नेम्ड फॉर द basophilic keratohyaline granules that it contains, blue stain with HNE. The nuclei show signs of degeneration and pycnosis. This still synthesizes protein, but reports of synthesis rate at this level is different. ये भी प्रोटीन करते हैं, पर सिंथेसिस करते हैं, लेकिन जो सिंथेसिस का रेट है वो डिफरेंट होता है। The cell layer so far contain nucleated living cells and are collectively known as Malpighian layer. Malpighian ट्यूब्यूल से कंफ्यूज मत करना, ये Malpighian लेयर है। The cells so far contain nucleated living cells. Nucleated living cell तो Malpighian layer. At the same time, the lamellar granule, a small organelle that is keratinosome यानी ऑडलैंड बॉडी, ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है MCQs में कि ऑडलैंड बॉडी कहाँ है, तो क्या लिखोगे, स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम। Forms in the upper spinous and granular cell layers. It has internal lamellated structure. Laminal granules discharge their content into intercellular space. जो lamellar granules हैं वह intercellular space में अपना discharge करेंगे secretion, forming an intercellular lamellar material which contribute to the permeability barrier. The barrier is formed at the junction of granular and cornified cell. Next layer क्या है, stratum corneum. तो ये एक barrier बनाता है junction पे। The stratum corneum is made up of cells which are larger and flatter than granular cells. ठीक है, ये हो गया, यहाँ से शुरू होता है स्ट्रैटम कॉर्नियम, तो ये हो जाता है, वो भी फ्लैटर सेल है, ये भी फ्लैटर सेल है, बट ये लार्जर होता है। द सेल्स स्टेन ब्राइट पिंक विथ हिस्टोलॉजिक डाइयोसिन। Here all the nuclei and other organelles such as ribosome and mitochondria have disappeared. The keratohyaline granules have disappeared. Ultrastructurally, the cells of the cornified layer are composed of densely packed filaments developed from tonofilament. ठीक है, altered and coated by the basic protein of the keratinohyaline granule, इसको बोलते हैं filaggrin. The pattern of maturation is called as orthokeratinization. When the cell surface layer contains shrunken or pycnotic nucleus, तो इसको पैराकेरेटिनाइज बोलते हैं। फिर से बोल रही हूँ, ऑर्थोकेरेटिनाइज और पैराकेरेटिनाइज क्या होता है, जो पैराकेरेटिनाइज होता है उसमें श्रंकन या पिक्नोटिक न्यूक्लियस रहेगा, और जो तुम्हारा ऑर्थोकेरेटिनाइज है उसमें जो सेल होते हैं वो कॉर्निफाइड होते हैं, डेंसली पैक्ड होते हैं, और वो टोनोफिलामेंट से बनते हैं, और उसमें एक बेसिक प्रोटीन होता है केराटिनोहाइलिन ग्रैन्यूल जिसको बोलते हैं फ्लैजरीन। तो ये ऑर्थोकेरेटिनाइज वे ऑफ मैच्योरेशन होता है। Epithelial cells that ultimately keratinize are called keratocytes or keratinocytes. Keratinocytes increase in volume in each successive layer from basal to granular. ठीक है, वॉल्यूम बढ़ता है। The cornified cells however are smaller in volume than the granular cells. क्यों, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि वो लोग 2/3 करता है बेसल और ग्रैनुलर, स्पाइनोसम. The cells of each successive layer cover a larger area than do the cells of the layer immediately below. अब आगे करेंगे non-keratinized. Non-keratinized epithelium. So non-keratinizing epithelia differ from keratinizing epithelia. क्यों,
क्योंकि इनके पास एक कॉर्निफाइड सरफेस नहीं होता है. Non-keratinized epithelia differ from keratinizing epithelia because they do not have a conified surface. Also, there are other differences. The layers in non-keratinizing epithelium are referred to as basal, intermediate and superficial. तो याद रखना सिबलिंग का सिब SIB ऊपर से नीचे, सुपरफिशियल, इंटरमीडियम एंड बसेल. वहाँ पे क्या क्या था? बसेल था, फिर तुम्हारा स्पाइनोसम, ग्रैनुलोसम और कॉर्नियम. The basal cells of both types are similar. Okay? Now, the cells of stratum spinosum are larger and the intercellular bridges are less conspicuous. Granular layer is absent. यहाँ पे कौन कौन सा लेयर था? Stratum intermedium, तो उसी को यहाँ पे spinosum बोल रहा है कि the cells of stratum spinosum are larger and the intercellular bridges are less conspicuous. Granular layer इसमें absent होता है. Cells of superficial layer contain nuclei and are plump and do not stain intensely with eosin as does the surface. वहाँ पे कर रहा था eosin से pink, यहाँ पे नहीं करता है. Ultrastructurally, tonofilaments are remain dispersed and so appear less conspicuous. ये remain dispersed रहता है, वहाँ पे desmosome की वजह से prickly pear appearance दे रहा था. The surface layer thus contains cells with loosely arranged filaments and are not dehydrated. ठीक है, the surface layer thus contain cells with loosely arranged filaments and are not dehydrated. They thus form the surface that is flexible and tolerant to both compression and distension. ये important है यहाँ पे याद करना कि देखो ये जो इसका सरफेस है ये किसके लिए? कंप्रेशन और डिस्टेंशन. क्यों? क्योंकि दे आर नॉट अरेंज्ड properly, they are loosely arranged, they are not dehydrated. This is also important. Okay, so the surface layer thus contains cells with loosely arranged filaments and are not dehydrated. They thus form the surface that is resistant to both compression and distension. Ultrastructure of epithelial cell. The characteristic feature that distinguish epithelial cell from other cell are filamentous strands called tonofilaments and intercellular bridges called desmosome. देखो एपिथेलियल सेल को अदर सेल से कौन फिलामेंटस स्ट्रैंड्स को डिफर करता है थ्रू टोनोफिलामेंट्स एंड इंटरसेल्युलर डेस्मोसोम. ओके, केमिकली टोनोफिलामेंट्स बिलोंग टू क्लास ऑफ इंट्रासेल्युलर प्रोटीन नोन एज. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये वाइवा का. once again the characteristic feature that distinguish cell from other cell are filamentous strands called tonofilaments and intercellular bridges or desmosome. Chemically, tonofilaments belong to class of intracellular protein known as cytokeratin, which characteristically constitute epithelial cell. Epithelial cells are often called as keratinocyte because of its content of keratin filament. एपिथेलियल सेल को क्या बोलते हैं? केराटिनोसाइट. क्यों? क्योंकि उनके पास केराटिन होता है. द टोनोफिलामेंट्स एग्रीगेट टू फॉर्म बंडल ऑफ फिलामेंट्स जिसको टोनोफिब्रिल्स बोलते हैं. केराटिन्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर वेट. लो मॉलिक्यूलर वेट इज फाउंड इन ग्लैंडुलर एपिथेलियम और इंटरमीडिएट में होता है, स्ट्रैटिफाइड में होता है और हाईएस्ट किसमें होता है? केराटिनाइज लेयर में. ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है जिसमें टोनोफिलामेंट्स अटैचमेंट प्लेग दिखला रहा है. Cohesion between the epithelial cell is provided by viscous intracellular material consisting of protein carbohydrate complex secreted by epithelial cells themselves. Desmosomes are circular or oval areas of adjacent membrane adhering by specialized intracellular thickening जिसको बोलते हैं attachment plate to which bundles of tonofilament stick. See, tonofilament attachment plate. Moving ahead. ये देखो टोनोफिलामेंट अटैचमेंट प्लेट. फिर से मैं बोल देती हूँ. कोहेशन बिटवीन द एपिथेलियल सेल इज प्रोवाइडेड बाय विस्कस इंटरसेल्युलर मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है, कॉम्प्लेक्स जिसको सिक्रीट करता है कौन? तुम्हारा एपिथेलियल सेल. डेस्मोसोम्स आर सर्कुलर ओवल एरियाज ऑफ एडजेसेंट सेल मेम्ब्रेन अधरिंग बाय स्पेशलाइज्ड इंट्रासेल्युलर थिकनिंग जिसको बोलते हैं अटैचमेंट प्लेट. इससे तुम्हारा टोनोफिलामेंट इंसर्ट होता है. देखो अटैचमेंट प्लेट जिसे टोनोफिलामेंट एंड ये सर्कुलर या ओवल भी हो सकता है. मूविंग अहेड. adhesion between the epithelial and connective tissue is provided by hemidesmosome. अब देखो एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू को कौन जोड़ेगा? हेमिडेस्मोसोम. दे आर डिस्टिंक्ट एंटिटी एंड आर प्रोटीन डेस्मोप्लेकिन फॉर्म द अटैचमेंट प्लेट इज फाउंड ओनली इन डेस्मोसोम. देखो बेसेल सेल है, फिर बुलस पेम्फिफर्ड एंटीजन है, हेमिडेस्मोसोम, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सब लैमिना लूसिडा डेंसिटा
डेंसा आगे। द डेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम एंड टोनोफिलामेंट्स क्या करता है? लिंकेज बताता है। कौन सा? मैकेनिकल। और डिस्ट्रीब्यूट्स द लोकलाइज फोर्स अप्लाइड टू द एरिया ओवर अ वाइड एरिया। देखो हेमीडेस्मोसोम, ठीक है, फिर तुम्हारा क्या कहते हैं, हेमीडेस्मोसोम, डेस्मोसोम और टोनोफिलामेंट्स दिख रहा है तुमको इसमें? ये सारा क्या कहता है? तुम्हारा फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। Basement membrane of epithelia. The epithelial cell rests on a thin basement membrane. ठीक है? It is multi-layered epithelia. The deepest cells lie on the membrane. Basement membranes are formed by thin layers of amorphous material and of reticular fibers. Important. Amorphous material and of reticular fibers. A distinct membrane a distinct basement membrane cannot be seen in H&E preparation but can be well demonstrated using PAS method. Glycoprotein present in the membrane. See, this is your epithelium, cilia, mucous membrane. This is your histo slide. Under the electron microscopy, a basement membrane is seen to have a basal lamina. ठीक है? Nearest the epithelial cell and a reticular lamina on the fibroreticular lamina, consisting of reticular tissue and merging into surrounding connective tissue. The basal lamina is divisible into the lamina densa, जिसमें fibrils होगा, and lamina lucida जो अपीयर करेगा ट्रांसपेरेंट। बाहर का डेंसा होता है, अंदर में लुसिडा होता है, लुसिडा ट्रांसपेरेंट होता है। The lamina lucida lies against the cell membrane of epithelial cell. देखो ये तुम्हारा लैमिना लुसिडा, उसको सराउंड करता है डेंसा। नॉन केराटिनोसाइट्स इन ओरल एपिथेलियम, क्लियर हैलो अराउंड द न्यूक्लियस, क्लियर सेल। इसमें क्या होता है? मेलानोसाइट होगा, लैंगरहैंस। ये तुम्हारा 10 मार्क्स क्वेश्चन होता है यूनिवर्सिटी में। नॉन केराटिनोसाइट्स इन ओरल एपिथेलियम, तो लिखोगी क्लियर हैलो अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर सेल्स 4 टाइप के, एमएल याद रखना, ठीक है? मेलानोसाइट, मर्कल सेल, लैंगरहैंस और लिम्फोसाइट। 10% of the cell population of oral epithelium. Okay. Lack desmosomal attachment to adjacent cell during histologic processing. The cytoplasm shrinks around the nucleus to produce clear halo. ठीक है? Do not contain tonofilament and desmosome and do not participate in maturation. Therefore, they are called as non-keratinocytes. ना ये तुम्हारा maturation कराएगा, इसके पास टोनोफिलामेंट भी नहीं रहता है। Melanocytes. They are melanin is produced by melanocytes situated in the basal layer of oral epithelium. Okay, basal layer. Arise from neural crest cell. Enter the epithelium at about 11th week of gestation. Divide and maintain self-producing population. Lacks desmosome and tonofilaments. Long dendritic process that extends between the keratinocytes. Melanin is synthesized within the melanocyte as small structure called melanosome. ठीक है? These are injected into the cytoplasm of the adjacent keratinocyte by dendritic process of melanocyte. Both dark and lightly pigmented individuals have same number of melanocyte color differences due to the activity of melanocyte. ये क्वेश्चन आ सकता है कि नंबर ऑफ मेलानोसाइट्स पे डिपेंड करता है, एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है? Melanophages and macrophages which have taken the melanosomes produced by the melanocytes. Macrophages और जो melanophages है वो किससे होता है? melanocytes से produce. Melanocytes are involved in the development of oral melanic macule, nevus and melanoma. याद रखना। लैंगरहैंसन ये भी डेंड्राइटिक सेल है, कहाँ पे देता है? सुप्रा बेसल लेयर ऑफ ओरल एपिडर्मिस, वो था बेसल लेयर। लैक डेस्मोसोमल अटैचमेंट, तो क्लियर अपीयर करता, वो भी लैक करता था। हाई लेवल क्लियर ड्यू टू लोकेशन इन द अपर पार्ट ऑफ द एपिथेलियम, वो बेसल लेयर में था। अल्ट्रा स्ट्रक्चरली कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल रॉड ऑफ फ्लास्क शेप ग्रैन्यूल्स, उसको बोलते हैं बर्बिक ग्रैन्यूल्स। इसमें क्या होता है? स्मॉल रॉड और फ्लास्क शेप ग्रैन्यूल्स होता है जिसको बोलते हैं बर्बिक ग्रैन्यूल्स। Appear in the same time as the epithelium as melanocytes, capable of limited division in epithelium. Move in and out of the epithelium, migrate from epithelium to lymph node. Source इसका क्या है? Bone marrow. Immunologically function, recognize and process the antigens that enter the epithelium and present to help टी लिम्फोसाइट। देखो इसका इम्यूनोलॉजिक फंक्शन क्या है कि ये रिकग्नाइज करता है एंटीजन को जो तुम्हारे एपिथेलियम में करता है, और टी लिम्फोसाइट फिर टी बी को सीक्रेट करेगा। टी का भी 4 फॉर्म होता है, तुम्हारा हेल्पर सेल, सप्रेसर,
इम्यूनोलॉजिक फंक्शन जो होता है इसका क्या होता है कि ये रिकग्नाइज करता है प्रोसेस को, एंटीजन जो एंटर करता है एपिथेलियम में, और ये क्या करता है, हेल्प करता है टी हेल्पर सेल्स को। टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, तुम्हारा सप्रेसर, फिर तुम्हारा मेमोरी, फिर हेल्पर सेल। तो ये किसको हेल्प करता है, टी हेल्पर सेल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मर्कर सेल, मर्कल सेल बेसल लेयर ऑफ ओरल एपिथेलियम, ये भी नॉन नहीं, ये डेंड्राइटिक था, बाकी ये नॉन डेंड्राइटिक है। हैव केराटिन टोलोफिलामेंट्स एंड ओकेजनल डेस्मोसोम लिंकेज टू एडजेसेंट सेल। ये दोनों सेल से डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि इसके पास डेस्मोसोम और टोनोफिलामेंट है। ठीक है, इसके पास क्लियर सेल नहीं होता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल इन साइटोप्लाज्म सिचुएटेड एडजेसेंट टू नर्व फाइबर विद इन द सेल। अब देखो, granule liberate transmitter substance across the synapse like the junction between the Merkel cell and nerve fiber and trigger an impulse. Merkel cells are sensory and respond to touch. Lymphocyte. When section of epithelium is taken, number of inflammatory cells are seen. Most frequent are lymphocyte, PMNLs and mast cells. Lymphocytes are associated with Langerhans cells which are able to activate T lymphocytes. Most frequent are lymphocytes, PMNL mast cells. Lymphocytes are associated with Langerhans cells which are able to activate T lymphocyte. Okay, they are able to activate your T lymphocyte. Junction of epithelium, basement membrane, connective tissue. ये diagram बना लेना एग्जाम में. Connective tissue papillae interdigitate with epithelial ridges. Okay. Then arrangement makes the surface area larger, provides better attachment, enabling the forces applied at the surface of epithelium over greater area of connective tissue. Masticatory mucosa have greater number of papillae in lining. Mucosal papillae are fewer and shorter. So arrangement makes the surface area longer, okay, provides better attachment, enable the force applied at the surface of epithelium over greater area of connective tissue. Masticatory mucosa have greater number of papillae in lining. Mucosa papillae are fewer and shorter. Basement membrane appears as structureless band between epithelium and connective tissue in H&E section. Bright red in pars. Basal lamina consists of lamina densa and lucida. Okay, now see the diagram. Lamina lucida, lamina densa. Lamina lucida is opposite to hemidesmosome, 45 nanometer wide. Densa is below lucida, 50 nanometer wide. Small loops anchoring fibrils are inserted into lamina densa. See, there are loops emerging from lamina densa, lamina lucida inside of lamina densa. Lamina lucida contains bullous pemphoid antigen which is associated with adhesion of basal cells with basement membrane and a protein called laminin. Lamina densa contains type 4 collagen arranged in chicken wire configuration. Proteoglycan heparin sulfate coats both surface of lamina densa. The anchoring fiber consists of a type of 7th collagen, and the collagen that runs through the loops formed by the anchoring fibers is type 1 and 2. Because of the complex arrangement, it is called as basal lamina या basal complex. ठीक है? Under light microscope, the basement membrane is much thicker than lamina lucida and densa. Okay? All basal lamina except anchoring fibril is synthesized by epithelium.